कि देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, देयर इज़ एन एटमॉस्फेयर कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, ये बकवास है। बट द लॉ इज एप्लीकेबल टू दीज मिलियंस ऑफ पीपल। आई मीन व्हाट रबिश, एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। What? No, no, no. Agriculture. Let's go through, please. Everybody in this country should go through what is called the state list. What is the central list? And the concurrent And list. the concurrent list. Technology then evolves to bring about these corrections. We also evolve to bring about corrections. And government evolves to bring in checks and balances. Even if government, if there are lapses on part of the government, impacts only when you talk of government. So मैंने सारे MPs गिन लिए, सारे MLAs गिन लिए, MLCs गिन लिए, bureaucrats, all the other office administrative staff, the peons, the drivers, सबको गिन लिया. What percentage of the total population is that? अब कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, दीज आर द लास्ट बैच ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम एक प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये डायरेक्टली आप जो काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ मसला है। एक चिंता है, एक परेशानी है, एक दिक्कत है कि रेगुलेशन डिजिटल मीडिया में अगर आए, किस तरीके का आए, कैसे आए, सरकार क्या अंगूठे के नीचे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको दबाना चाहती है, अपने मन मुताबिक बात कहलवाना चाहती है, इस वजह से रेगुलेशन लाना चाहिए। रेगुलेशन हो या ना हो ये मसला अलग है। जैसे हमारा ये मानना है कि आपको एक डिसेंसी के दायरे में रह करके अपनी पत्रकारिता करनी चाहिए, उसके लिए कुछ नियम अगर आप खुद से बनाना चाहें या सरकार के साथ मिल करके बनाएं, वो मसला अलग है। लेकिन वो रेगुलेशन लाने के पीछे की नीयत पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर कंचन गुप्ता का क्या कहना है? नहीं, देखिए, अब एज ऑफ टुडे देयर इज नो रेगुलेशन, लेकिन ये एक दिस इज अ मिसकंसेप्शन। रेगुलेशन है, वेरी वेल थॉट आउट, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस आर्किटेक्चर। आज के दिन में कोई रेगुलेशन नहीं कहता है, उसे कहते हैं गवर्नेंस आर्किटेक्चर। तो द आईटी रूल्स 2019, अगर आप सेक्शन 3 देखें, दैट डील्स विथ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया जैसा आपका है, विच इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन वेंचर, और डिजिटल मीडिया जो अखबार प्रिंट मीडिया में है या टेलीविजन में है, उनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग इज कवर्ड ओवर देयर। एंड 2023 में उसका एक्सटेंसिव रिवीजन भी हुआ है, because platforms have also been covered in that. So there is a regulatory structure in place. कौन कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेंट करने पर उसका फॉलो अप एक्शन क्या होगा, who are the affected parties, everything has been defined in it. तो आपने नया अपना चैनल शुरू किया है, आप प्लीज गेट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ IT रूल्स 2019 एंड गो थ्रू इट, बिकॉज दे अफेक्ट यू, दे इम्पैक्ट यू। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ओके, दूसरी जो पार्ट है, जहाँ तक सरकार की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज थ्रू एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, वॉट एवर, स्पेंडिंग मनी ऑन यू। अब सबको मिलता है, आपको भी मिलना चाहिए। अखबारों को मिलता है, टीवी न्यूज़ चैनल्स को मिलता है, लेकिन अब तक जो था डिजिटल मीडिया का एक बड़ा लूज फ्लोटिंग, इट वाज नो सिस्टम, इट जस्ट हैपेंड। तो INB मिनिस्ट्री ने अब एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग पॉलिसी उसको भी तैयार किया है। इट इज़ इन दी पब्लिक डोमेन, आप उसको देखें, और अगर आपको लगता है कि यू आर एंटाइटल्ड टू गवर्नमेंट एड्स, गवर्नमेंट वट एवर पब्लिसिटी, यू शुड आस्क फॉर इट। जहाँ तक फंक्शनैलिटी की सवाल है,
you need government access as a journalist. तो जिसे कहते हैं एक्रेडिटेशन. एक्रेडिटेशन के लिए भी जो 2 साल पहले, बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व विद द रिविजन, करेक्ट, उसमें भी इट हैज़ नाउ बीन लेड आउट वेरी क्लियरली कि डिजिटल के लिए व्हाट आर द क्वालिफाइंग मार्कर्स, और उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिशन का स्पेस दे रखा है कि अगर आप नया चैनल शुरू कर रहे हो, आपका इतना व्यूअरशिप हो, इतना व्हाट डू यू कॉल इट, योर चैनल मस्ट हैव सो मेनी सब्सक्राइबर्स हो, ये पॉसिबल नहीं होता है, वी अंडरस्टैंड इट. सो that's why there is a lot of discretionary space which has been given to the accreditation authority कि आप you can then facilitate accreditation. So all this has been done. Now personally मुझे लगता है कि keeping pace with technology is an impossibility. So you have to look at an overarching गवर्नेंस स्ट्रक्चर जहाँ पर आप कहीं ना कहीं फिट हो जाते हो, और वो हो रहा है. आईटी एक्ट है, आई टोल्ड यू आईटी रूल्स, सो ऑल दीज टेकन टुगेदर आर गोइंग टू कम इन टू प्ले. लेकिन लुक एट द फ्लिप साइड ऑफ इट कि आपके लिए आज हम लोगों ने 2014 में आई स्टार्टेड अ स्मॉल वेंचर कॉल्ड नीति, आपको पता होगा. तो वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा किया, वो रेडियो की इंटरनेट के माध्यम से क्या रेडियो कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन नॉट अंडर करंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आप न्यूज़ और करंट अफेयर्स का रेडियो नहीं कर सकते. एंटरटेनमेंट वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन न्यूज़ और करंट नहीं कर सकते. तो व्हाई नॉट यूज इंटरनेट to start internet radio. वहाँ पर this rule doesn't apply. लेकिन आगे चल के अप्लाई करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है. तो it is for the new generation to keep pace with technology. सरकार अपने आप अपने स्पीड पे करते रहेगी, और let the two be mutually disconnected. म्यूचुअल कनेक्शन होने से ही इंटरेस्ट ग्रुप्स, इंटरेस्ट लॉबीज, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मीडिया में सबको पता है कि एक ऐसा भी समय था जब एडिटर्स बनते थे जो डोर ओपनर्स, दे वुड एंश्योर कि डोर्स ओपन फॉर देयर ओनर्स. दैट इज नॉट अ वेरी हैप्पी सिचुएशन. तो सरकार अपना काम करे, मीडिया अपना काम करे. There will be some meeting points, there will be some points of difference. That's fine. तो ये तो प्रशासनिक मुद्दे हो गए. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये कहना है कि जब गवर्नमेंट्स काम करती हैं तो एक जो फियर है, एक जो डर है, वो ये है. Your fear, I don't understand this concept of fear. You are sitting in a high security zone in a room and you are talking openly. I have not told you कि भाई इस पे बात मत करो, उस पे बात मत करो. हाँ, तो what is this fear about? देखिए ये तो हमारी बातचीत हो रही है. बात ये हो रही है जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स को क्रिटिसाइज करने लगते हैं. This applies to everybody. This applies to everybody. And the other thing मैंने foreign everybody media, मतलब all journalists, हाँ, okay, all media. I have told, sitting here in this room, I have told several foreign journalists, you keep on running the same story again and again. Government is forcing media, government is curbing media, government is silencing media. Baba, you are sitting with me, you can quote me as saying, and nobody is going to come after you. ये सोच ही गलत है. Now, if you assume कि if I don't do this, then government will not be happy. No, that is your problem, not government's problem. और मैंने ये बात भी सबको बोला है, and without any fear of contradiction, that Prime Minister Modi does not care.
अबाउट व्हाट इज बीइंग रिटन, आप या जो क्या कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा क्या है? whatever you wish to say, please say. He has gone through much worse. After 2002, between 2002 and 2014, what he has gone through between 2014 and 2024 is not even a fraction of that. So if he was able to survive that, this is nothing. And he, believe me, he is not the kind who will spend his time, अरे संकेत ने मेरे बारे में ये बोल दिया, अब क्या होगा, 10 लोग इस पर चर्चा करेंगे. His time management is totally different. कोई this morning I saw he attended, we are meeting on a Friday. So he was in a party meeting till 3:30 in the morning on Friday. And then again early morning, before I woke up, there were messages कि आज का program क्या है, what is the significance of Sindri plant being restarted. So where is the time spent on कि भाई सुबह के अखबारों में क्या छपा है, उसमें क्या बोला गया है. पर जो छपता है, जो बोला जाता है, उसका फर्क तो पड़ता है. नहीं, क्या उसका फर्क पड़ता है? मतलब I refuse to believe that the government is absolutely thick-skinned to. No, the Prime Minister himself says that you please criticize. You please tell me these are the 20 things wrong with this. If not only you, if I were to send a small parcha saying that on something as remote from my work zone as say defense, कि this is wrong, even that is taken note of. यही मैं कह रहा था कि अगर कुछ होगा तो ऐसा नहीं है कि वो मॉनिटर नहीं हो रहा है. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अरे इट्स ये बहादुर शाह जफर की कोर्ट नहीं है. दिस इज नॉट लाल किला ड्यूरिंग बहादुर शाह जफर टाइम. कि क्या हो रहा है बहादुर शाह जफर को मालूम नहीं है, नॉट डज ही केयर, नॉट डज ही गिव अ डैम, ऐसा नहीं है. नहीं, मेरा जो एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या फिर आपसे जो सवाल पूछना मेरा इतना कहना है कि पीपल हु कीप ऑन सेइंग कि देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, देयर इज एन एटमॉस्फेयर कि भाई मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, ये बकवास है. मेरा बस ये मानना है कि अगर जैसे द रेड माइक में हमें अपनी डिसेंसी और अपनी बाउंड्री ये नहीं कि हमको किसको आलोचना करनी है या नहीं, बाउंड्री ये कि हम लोग शब्दों में और अपनी मर्यादा में और फैक्ट्स को लेकर के हम कैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. जहां तक वो सही है उसके आगे बोलना अपना हक. Those are the ethics. Those are the ethics, basic ethics of journalism, and nobody should violate that. What kind of language you use, what kind of भाषा की शैली, शब्दों का चयन, ये सब उसी में आता है. Also the purpose, आपने क्यों किया है, ये चैनल क्यों शुरू किया है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट इशू है, विषय है. तो कंचन दा, जो सबसे बड़ा आप कह रहे हैं कि डर क्यों है, डर क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ. वो डिसेंसी का दायरा, पत्रकारों को पत्रकार होने का जो एक महत्व है वो समझते हुए करना है. यहाँ पर आलोचना ये होती है, और इसको बहुत हद तक जायज़ भी माना जा सकता है कि आप अगर मेन स्ट्रीम चैनल्स देखें तो वो तो रेगुलेटेड हैं. रेगुलेटेड से मेरा मतलब वो आपको लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, आप ऐसे ही चैनल नहीं चला सकते. और उस मेन स्ट्रीम मीडिया में आप वो जो मर्यादा और वो जो डिसेंसी है उससे बहुत बहुत हद तक दूर चले गए हैं. कई कमेंट्री इस तरीके से की जाती है, स्वीपिंग जनरलाइजेशंस, लेकिन उसमें आपको कोई कार्रवाई होती दिखती नहीं. संकेत, दैट इज अ प्रॉब्लम, ग्लोबल ट्रेंड है ये. You know, there is a reverse process now. Opinion overtakes facts. Facts, correct. So, I think what has also happened is there's a
democratization of information. The very fact today that you are running a channel which you couldn't have thought of 5 years ago, Oh, 10 absolutely. years ago. So, the multiplicity of sources of information has made the consumer of information more aware. It is still early days. For instance, fake news, for instance, AI generated deep fakes. These things will happen. And you and I will also fall victim for it. हाँ, ये सबसे बड़ी होगा कि जाने अनजाने में अगर मुझसे हो गया हो कोई गया चीज, ये होगा. I did not intend to do it, लेकिन अब क्या No, करें? no, but that's what I'm saying. It will happen. How do we deal with it? Fake news by itself is not something of such great concern either to institutions or to government. By institutions, I mean media institutions. But when fake news is weaponized, I'm using fake news to target someone, target some organization, target some institution, then it is a problem. AI generated deep fakes, by itself you cannot stop it. There are hazar open AI apps now available. Yeah. You can put in your photo and it will come out like a monkey face. Or you can put a monkey face and it will come out like your face. So, you cannot stop it. But when I start using that app to create a monkey face out of Sanket, to use it to target him, that is when the problem begins. So, as technology develops, as technology evolves, you as media or media as a whole has to keep pace with it. And government as a governing structure has to keep pace with it. Now, government, what it does is it tries to take a big picture view. कि आज से 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी क्या होगा उसको सोचते हुए एक करती है. IT rules I mentioned to you, 2019 when the IT rules were brought in, it was felt that this is all encompassing. By 2023 it was felt no, I mean, you know, things have moved far too fast. So amendments were further brought into it. So that is how government will cope with the situation. That is how you have to cope with the situation. Anything beyond that, which is of criminal nature, then the criminal laws will take over. They will kick in. आपको लगता है मैं कि आपको एक ऑफ द कफ एग्जांपल दे रहा हूं. अगर देयर इज अ फेक न्यूज एंड अरविंद केजरीवाल रीट्वीट्स इट, there will be someone who will drag him to court over it. And he will have to go and grovel and say, I made a mistake, ji. So, this will happen because let me tell you, there was a time when something called printer's devil was very common. I joined the press when they were still using hot metal. Correct. And we were using typewriters. So every day there would be a whole number of printers devils in the paper. कि मतलब कुछ गड़बड़ हो जाए, गलत लिख उठे. So Gandhi would come out as Gadhi. Now you haven't done it on purpose. Yeah. But gradually technology ensured that these mistakes were minimized. And incidentally, I didn't say Gandhi, Gadhi with any purpose, but the Guardian did make this mistake. Yeah. The Guardian did make this mistake, and that is why I'm referring to it. And technology then evolves to bring about these corrections. We also evolve to bring about corrections.
and government evolves to bring in checks and balances. So it will happen on its own. You don't और have to जहाँ worry. तक स्टेक होल्डर्स से बातचीत की बात, ये मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब तब होगा जब बड़ा अस वर्सेस देम वाला एटीट्यूड आएगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए एक नियम आ रहा है और हम उस तरीके के स्टेक होल्डर्स नहीं है, हमारी बातें उस तरीके से एक पॉलिसी में सम्मिलित नहीं हो I will tell you something. On all new laws, those laws were placed in the public domain, especially laws dealing with digital content were placed in the public domain. Invitations were invited and people were asked to send in their comments. Conferences were held in all major cities where anybody could come in and participate. And despite that, if people say, but I was not consulted, there is no answer to that मेरा ये कहना है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी बदल रही है तो कानून भी उसके हिसाब से, तो ये लगातार प्रक्रिया नहीं बन सकती है जिसमें ये कंसल्टेशन लगातार बना रहे. Yeah, but there are bodies with which government is engaged quite often. Now the problem is that when these bodies become lobbying institutions, in the guise of looking at at this particular law, you come and say, ऐसा था ना कि हम लोग सोच रहे थे कि अगर टायर पर टैक्स कम कर दिया जाए. ऐसा होता है? नहीं, I'm giving you an absurd example. Forget tires. I mean, shirts पर अगर कुछ छूट दिया जाए, चश्मे पर कुछ छूट दिया जाए, whatever. That is not consultation. Consultation is a very serious business. It's a very serious process, and even if there are lapses on part of the government, there should be minimal lapses on part of the stakeholders. The responsibility of the stakeholders is way more important than that of the government, because government comprises only these many number of people. But the law is applicable to these millions of people. Right? तो जब वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए खुले तो वो उसी गंभीरता के साथ उसमें कमेंट्स भी दें. आई थिंक उसी गंभीरता के साथ कमेंट्स दें, उसी गंभीरता के साथ उसको फॉलो अप करें. उसी how many people have actually bothered to find out these 3 new laws which are going to replace the IPC, CRPC and Witness Act? उसकी जो बेसिक एग्जीक्यूटिव समरी है, कम से कम उतना तो पढ़ना चाहिए. जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पुअर फार्मर और पुअर लेबर वर्कर और पुअर रिक्शा पुलर. मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा. मैं जो कर रहा हूँ पीपल लाइक यू एंड मी, पीपल लाइक अस, who are commenting on it. So have they even read it? नहीं, इन कानूनों में सबसे जरूरी तो ये जानना है कि बदलाव क्या क्या हुआ. हाँ, तो वो all that is there. कानून की पाठशाला करते हैं हम. all that is there. All that is available in the public domain. Like sometimes, I confront people by saying, I mean, what rubbish, agriculture is a state subject. What? No, agriculture. You plus go through, please. Everybody in this country should go through what is called the state list. What is the central list? And the concurrent and list. the concurrent list. ओ जी कोरोना हुआ, सेंटर ने कुछ नहीं किया. Health is a state subject in our country. It is not even a concurrent list subject. It is not even a central list subject. Elementary civics. So ये सब चीजें, you see, for a country to become, economic growth is going to happen. I know you will say that I am doing propaganda for Mr. Modi, but Mr. Modi has set this country on a certain flight path, and it is now going to happen on its own for the next few years. Till such time you decide to disrupt the flight path, it is inevitable
Okay, but does economy alone make you a big power? It is also the informed citizenry. Correct. And that is why I said that the stakeholders' responsibility is many times more than the responsibility of the government. Even a criminal law brought in by the government impacts only, when you talk of government, so many सारे MPs गिन लिए, सारे MLAs गिन लिए, MLCs गिन लिए, bureaucrats, all the other office administrative staff, the peons, the drivers, सबको गिन लिया. What percentage of the total population is that? Very limited. Very limited. So that law is going to impact me. तो दादा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, तो फिर ये कानून फिर बहुत स्पीड में नहीं आने चाहिए थे. ये जो No, है, but they were in the public domain for a long time. क्योंकि ये तो आपने जाना ही नहीं, है but ना. they were in the public domain for a long जैसे time. सेलेक्ट कमिटी में No, इस तरीके the की home चीज ministry, जाए. the home ministry was in regular consultation with stakeholders for a long time. You have state governments which don't attend meetings. Mamata Banerjee is angry with the Prime Minister, so she will not attend the next health minister's meeting. Why? Or she will not attend the Niti Aayog meeting. Why? You are making your own state subject to your own caprices. You are holding your own state hostage to your own politics. Who is to blame for that? I mean, I'm not saying that I don't even aspire to reach a position like that. But if I had been in her place, I would have said, now to I will attend the Niti Aayog meeting 10 times over. अपनी बात वहाँ I will say it in front of everybody and make them answer me. Instead, what do? Oh no, I will not go. I'm very angry. I will not go. And not only her, I mean all of them. तो ये that is not the solution forward. चलिए कंचन दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए और विस्तार से बात करने के लिए द रेड माइक से. थैंक यू सो मच. Thank you.